Good morning, students. Myself Rohit Agrawal. Today we are going to discuss chapter number 3rd, or we are just continuing that remaining part of chapter number 3rd of economics, national income. Okay, student, in our last video we have discussed about the concept of conversion. In that video we have discussed some formulas. We will interpret how we convert that particular, how we calculate the national income. We have discussed 6 terms. In last video, we have discussed the terminology related to a national income, domestic income, market price, factor cost, gross, and net investment. These 6 terms we have discussed in our last video. So, a quick recap with regards to last video. Suppose in concept of conversion, we have discussed here we have a gross, and if we have to calculate net, then what we need to do, what we add or subtract. I have already told you there is some trick to memorize or to just interpret it in a easier manner. If we have a gross, if we have a national, as well as if we have a market price, these three are the broader terms, while parallelly net, domestic, and factor cost, these are the smaller term as compared to these terms. So if we have a gross, then we subtract something, we will get net. If we have a national, again we subtract something, we'll get domestic. In the similar manner, if we have a market price, again there's a need to subtract something, so we get the factor cost. So what we subtract to get from gross to net, from national to domestic, and market price to factor cost. So suppose if we have a gross, so we simply deduct depreciation. Alternative name of depreciation, students, we have discussed in our last class. Come on, try to recap. Consumption of fixed capital, replacement of fixed capital. So we will get the term net. Simply, if we have a gross, we will subtract depreciation, we'll get net. In a similar manner, if we have a national, we will subtract NFIFA. Now, what does the term NFIFA? We have discussed net factor income from abroad. हमें फॉरेन से कितना पैसा नेट ऑफ होके आ रहा है, मतलब फॉरेन से कितना पैसा आ रहा है और हम कितना पैसे उनको पे कर रहे हैं, दोनों को नेट ऑफ करने के बाद क्या आता है हमारा NFIFA. तो हाउ टू कैलकुलेट NFIFA? FIFA minus FITA. FIFA is for factor income from abroad, एंड यहाँ पे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब हमें फॉरेन को कितना पैसा हमारे पास आया फॉरेन से एंड हाउ मच वी हैव टू पे. व्हेन वी नेट ऑफ दैट टर्म वी विल गेट अ NFIFA. नेक्स्ट, मार्केट प्राइस. सपोज वी हैव अ मार्केट प्राइस, देन वी विल सब्ट्रैक्ट माइनस NIT. What we need to do? We will subtract NIT. What does the term NIT mean, sir? Net indirect taxes. What does it mean? Net indirect taxes, again we are netting off some sort of a taxes. Government will impose a tax on the goods and services, and that tax is known as a indirect taxes that we are paying right in nowadays as on the name of GST, goods and service tax. So we can say indirect tax. आपको alternatively students GST के नाम से भी आ सकता है. So if we have an indirect tax, so we will simply subtract subsidy. So we'll get the NIT. NIT is what? Net indirect taxes. So indirect tax minus subsidy will get NIT. Hope ये फॉर्मुलेज आपको मेमोराइज हो गए होंगे. बहुत ही इजी है कन्वर्जन. स्टूडेंट्स, नाउ वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर 10 plus formulas are there in that particular chapter, in this particular chapter. If we simply frame our own formulas, it is much easier for us to interpret it and to find out the answer. Let's see. I'll just try with the help of one example. Here the question is in front of you. Calculate NNPFC. Now what does the term NNPFC means, students? I hope we have discussed this term in our last session. That is what? National income. And a parallel term, domestic income. Domestic income का name क्या होता है student? NDPFC. What does these terms means? Net national product at factor cost. कि इकोनॉमी के अंदर टोटल फैक्टर cost of production कितनी है by normal resident as well as the income, net factor income from abroad. So students, आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट NNPFC या कैलकुलेट NDPFC या कैलकुलेट कुछ और टर्म. In our last video we have discussed 8 terminology. I'm just repeating for a recap. NNPFC, NDPFC, GDPFC, GNPFC. These 4 terms relate with respect to factor cost. In the similar manner, NNPMP, NDPMP, GNPMP, and GDPMP. Again the 4 terms now with respect to market price. Okay, so on the basis of these terms we will calculate the national income. So now have a look how these particular practical questions will work and how we will solve them. Students, in this question
I have framed one question for the purpose that we will get a easy interpretation. In this question, there is some information given in this question. Given GDP MP is 1 lakh, FIFA 20,000, FITA 10,000, depreciation 10,000, indirect tax in bracket that is GST. Again, rupees 40k means 40,000, subsidy rupees 20,000. This is a complete question. Now, what we have to calculate? We have to calculate NNP-FC. In this question, we have to calculate NNP-FC, sir. So, there is one small trick, students. In question, first and foremost, we have to identify what we have to calculate. So, we have written here NNP-FC. This is what चाहिए. This is what calculate. जो हमें calculate करना है, what we required, we will write it down here. Parallelly, we will put the equal sign. And if we have the similar term, a term related to that A terminology में से कोई भी एक term होगा, we'll put that term in front of this. ठीक है, यहाँ हम इसको opposite में रखेंगे. So here I have written have. This is what we have. That is ये हमारे पास है. ये information हमें question में given है. Now, अब बच्चों students ये दोनों terms हमने equal रख लिए. Now what we need to do? If you here is one line. I have written one line. If we have to add, if we have to calculate an answer, we have to add or subtract in the given information. In question जो भी हमारे पास information given है, उसमें हम कुछ plus और minus करेंगे. I am repeating it. Listen carefully. हमें क्वेश्चन में जो भी गिवन है हम उसी गिवन इंफॉर्मेशन में कुछ प्लस या माइनस करेंगे. नाउ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें? इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन जीडीपी एमपी. सो हम प्लस और माइनस किस में करेंगे स्टूडेंट्स? जीडीपी एमपी में. ओके, नाउ बहुत इजी वे में समझते हैं. बस यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज 3 पॉइंट्स के what we need to do if we have to we need net domestic factor cost. मतलब हमारे पास क्या है और हमें कहां से कैसे कैलकुलेट करना है. Here in this question what we have student, G for, come on everyone, try with yourself. Now G for gross and यहाँ पे हमें चाहिए क्या है? N से first N is for net, second N is for national. So we have to calculate net and what we have a gross. What to do? हमें चाहिए net, हमारे पास क्या है? ग्रॉस. तो ग्रॉस बड़ा होता है, उसमें से कुछ माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? नेट. ओके, सिंपल. सो वी विल सिंपली माइनस डेप्रिसिएशन, बिकॉज ग्रॉस हम पे था, उसमें से हमने कुछ माइनस करा. अब वो कुछ क्या होता है स्टूडेंट? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन माइनस करा, वी विल गेट नेट. ओके, नाउ मूव ऑन. हियर व्हाट वी हैव? सेकंड टर्म स्टूडेंट्स, कम ऑन. सेकंड टर्म इज व्हाट? डी फॉर डोमेस्टिक. वी हैव अ डोमेस्टिक, बट एज पर द रिक्वायरमेंट हमें चाहिए क्या है? एन फॉर. सेकेंड एन किसका होता है स्टूडेंट्स? नेशनल का. सेकेंड एन इज फॉर नेशनल. सो अब हम पे डोमेस्टिक है. हियर वी हैव अ डोमेस्टिक. ठीक है, अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक कैलकुलेट करना होता है, व्हाट वी विल डू? वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट एन फीफा. तो हमें नेशनल में से एन फीफा माइनस करेंगे, वी विल गेट डोमेस्टिक. बट बच्चों यहाँ पे सिचुएशन वाइस वर्सा है हमारे पास. वी हैव अ डोमेस्टिक, हमें चाहिए नेशनल, तो हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे. इंस्टेड ऑफ माइनस हम क्या करेंगे? प्लस. मतलब नेशनल बड़ा होता है, उसमें से कुछ माइनस करेंगे डोमेस्टिक, बट हम पे डोमेस्टिक है, कुछ प्लस करेंगे नेशनल. होप समझ में आया आपको. सो व्हाट वी हैव हियर विद अस? डोमेस्टिक. एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? नेशनल. सो डोमेस्टिक में बच्चों क्या करें? कुछ प्लस की माइनस प्लस. क्या प्लस करें? एन फीफा. एन फीफा क्या होता है? फीफा माइनस फीटा. वी विल गेट. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. पीपी इज फॉर प्रोडक्ट. Product is common for all the 8 terminology. Now, next is what students? MP. MP is what? MP is for market price. We have a market price with us. We have, मतलब ये यहाँ पे market price question में इन्होंने given कर रखी है that we have. But what we have to calculate? हमें चाहिए क्या है student in this question? We have to calculate FC. Factor cost हमें चाहिए. Now, what we need to do? Market price is a bigger or a smaller term? Is a greater or smaller term? Is a bigger term. ठीक है. So what we need to do? If we subtract NIT, we will get the factor cost. Now what does the term NIT means? We have already done with the discussion. NIT is what? Net indirect taxes. Indirect tax minus subsidy. Hope समझ में आ रहा है students everyone. Now we have a MP. This is what हमने बहुत properly लिखा है बच्चों आपकी interpretation के लिए. This is what we have. हम पे है क्या इस समय? MP. और हमें चाहिए क्या है? FC. तो अब जो हम पे है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? We will add or subtract in the given information. जो हम पे है उसमें ही हम कुछ प्लस या माइनस करेंगे. तो हम पे है क्या? MP. इसमें हम क्या करें? प्लस की माइनस. MP is a greater term, so simply we will subtract. Subtract क्या? NIT. So we'll get that कि भाई FC में कन्वर्ट हो जाएगा. Now, student, this is what? ये मेन है हमारे लिए.
दिस इज व्हाट, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। एंड ऐसे इन शॉर्ट 10 फॉर्मुलेस, 10 प्लस फॉर्मुलेस हमारे फ्रेम हो सकते हैं। अगर आप इन फॉर्मुलेस को लर्न करने जाएंगे सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू मेमोराइज और टू रिमेंबर दीज फॉर्मुलेस। सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग ट्राई टू बी का कॉन्सेप्चुअल। अगर ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगर हमने स्मॉल कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, सो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग डील फॉर अस टू फ्रेम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। हम अपने ये खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं और एग्जाम में हमें ये फॉर्मूला भूलने की कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज वी आर फ्रेमिंग अवर फॉर्मूला विद अवर सेल्फ। ओके, सो ट्राई कि एक बार अगर अपन ये टर्मोलॉजी अच्छे से इंटरप्रिटेट कर लेंगे ना, तो ये कन्वर्जन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। होप क्लियर है। चलिए, नाउ लेट्स पुट अप वैल्यूज और लेट्स पुट अप फिगर्स। GDP MP, the value of GDP MP is given in a question. This is 1 lakh. I have put it simply here. Finance depreciation directly given in a question 10,000. So I have put minus 10,000. Thereafter plus N FIFA. N FIFA, how to calculate N FIFA, students? FIFA minus theta. Whether FIFA is given in question, answer is yes. Whether theta is given in question, answer is yes. So we will put bracket FIFA minus theta. Sir, अगर FIFA नहीं given हो या सर theta नहीं given हो, अगर in absence of any of the information we will simply consider it as a zero. अगर यहाँ FIFA given नहीं होता तो instead of 20,000 I'll simply put a zero. अगर हमें theta given नहीं होता, instead of 10,000 I'll simply put a zero. So in absence of information we'll consider it as a zero, so it will be a more convenient to calculate it. Hope clear है students? Okay. Next term is what? NIT. NIT is for net indirect taxes. How to calculate indirect tax minus subsidy? Have a look. Indirect tax given है क्वेश्चन में GST के नाम से, yes. सब्सिडी गिवन है, यस। ओके, सो वी हैव पुट माइनस का साइन इन ब्रैकेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 20,000, हियर 10,000 एंड 1 लाख माइनस 10,000 हाउ मच? 90,000 प्लस 20 माइनस 10 इट्स अ 10,000 माइनस का साइन 40 माइनस 20 20,000। सो व्हाट्स द आंसर वी विल गेट? 80,000। इट्स व्हाट? NNPFC, दैट्स अ नेशनल इनकम। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, जिस वे में हमने ये क्वेश्चन इंटरप्रेट किया है और समझा है, इन द सिमिलर मैनर अगर हमारे पास सिचुएशन चेंज हो जाए, क्वेश्चन वो मैं कुछ भी पूछे, इंस्टेड ऑफ दिस NNPFC इफ दे हैव गिवन सपोज GDP MP, अगर वो हमें यहाँ पे GDP MP कैलकुलेट करने के लिए दे देते एंड हमसे यहाँ पूछ लेते पैरेलली NNPFC, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते थे? आंसर इज यस। हमारे लिए उतना ही इजी होता कैलकुलेट करना, बिकॉज अब हम फॉर्मूला लर्न नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फ्रेमिंग अ फॉर्मूला विद आवरसेल्फ। होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। हम केवल चीजों को इंटरचेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ यहां रखते हैं हम, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, यहां हम रखते हैं GDP MP इक्वल्स टू विल पुट NNPFC, राइट? क्योंकि हमने व्हाट वी हैव लर्न, जो हम पे चाहिए, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, जो हमें चाहिए वो हम यहां लिखेंगे, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंड whatever we have वो हम उसके अपोजिट में लिखते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव। अगर क्वेश्चन इंटरचेंज हो जाता और क्वेश्चन में यहाँ पे NNPFC गिवन होता तो हम यहाँ NNPFC लिखते हैं और कैलकुलेशन में GDP MP कैलकुलेट करना होता तो हम यहाँ लिखते हैं। नाउ अब हमारे पास है क्या स्टूडेंट? NNPFC में नेट है यहाँ पे और चाहिए क्या है हमें? ग्रॉस। तो नेट छोटा होता है कि बड़ा? आई थिंक स्मॉलर। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस कुछ डेप्रिसिएशन। इन द सिमिलर मैनर व्हाट वी हैव? नेशनल। चाहिए क्या? डोमेस्टिक। नेशनल इज अ ब्रॉडर और स्मॉलर टर्म? ब्रॉडर। तो अगेन व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी सबट्रैक्ट व्हाट? एन फीफा माइनस कर देंगे नेशनल में से तो विल गेट डोमेस्टिक। एंड लास्ट पॉइंट हियर व्हाट वी हैव? एफसी एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? एमपी। एफसी इज अ ब्रॉडर और स्मॉलर टर्म स्टूडेंट्स, कम ऑन एवरीवन यार, ट्राई टू स्पीक। एफसी इज अ स्मॉलर टर्म। सो अब स्मॉलर तो कुछ प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? NIT। सो वी विल गेट दैट MP। Hope concept is clear to all of you. Now, further we will discuss methods in our next class. Thank you so much, students. Please be continued with the sessions so you will get the interpretation of whole chapter. Thank you.